लगता की विजन है कि ये अपने मतलब कि ये फिक्स्ड गोल्स लेके चल रहे हैं. This we'll see in the next slide. So vision. The vision of the new education system is holistic development. Holistic development means, but har ek bacha unique hai. One child may be good in maths, the other child may be good in science, the third one may be good in sports. So it is going to develop the child fully. Okay. First of all, they will focus on the unique qualities of the child. जेडे बच्चे दे विच कोई unique quality है, ओनू focus करेगा और ओदी complete development होएगी. Physical, mental, emotional, and the skills will also be developed. Foundational literacy. अभी हमारे यहाँ पे क्या चल रहा है कि जिसको just if he knows how to sign, अगर उसको sign करना तो वो literate है. तो but ये वो literacy नहीं है actually. But here foundational literacy and numeracy. Numeracy means numbers. Reading और writing बच्चे के ऊपर focus किया जाएगा और numbers की उसको बहुत अच्छी knowledge दी जाएगी. Then flexibility. This we have already done in the earlier slide. That the new education policy is to be very, very flexible for the children. And no hard separations. ये मैंने आपको पहले बता दिया कि कोई ऐसा नहीं है कि physics, chemistry, bio यही पढ़ना है. With physics, he can also take geography or English. It's up to the child. And it is multidisciplinary. Conceptual understanding, creativity and critical thinking. इसके ऊपर ये focus करेगा. Ethics, not only this, but it will focus on ethics. जिਵੇਂ आपको अनुसार है पता ही है कि अपने बच्चों के moral values दिन पर दिन घटते जा रहे हैं. So ethics, human values and constitutional values, they would be means some kind of programs will be there through which the children's education will be focused on all these values also to develop ethics, human and constitutional values. Then life skills, multilingualism and extensive use of technology. ते अपन सारियां नु पता है कि technology आज बच्चों दे हाथ दे विच है. So they must know this technology, proper use of it. Knowing technology is different thing, but using the technology in a proper manner, that's a different thing. So they would be taught to use technology in an effective manner, multilingualism or basic education foundational stage ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਲੈਂਗੁਏਜ. Then life skills will be developed in the students. So ये सारियां चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ vision है अपनी education policy ਦਾ, but it is simply in papers. इनो action ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਲਿਆ ਸਕਦਾ? We as parents, we as teachers. So there is a lot of responsibility on the teachers as well as the parents who have to put this policy. Means we all have to implement this policy to make it really successful. So this is the aim of the policy, but इस aim को achieve करने के लिए we all have to work together. तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि स्ट्रक्चरल चेंजेस हमारे में आ गई. पहले हम मतलब कि बच्चा 6 से 16 साल तक 10वीं करता था और 16 से 18 12वीं करता था. बट अब बच्चा क्या वो 3 years में हमारे पास आएगा and he'll be there with us till 6 years in the foundational stage. फिर उसके बाद वो preparatory stage में जाएगा 2 साल 6 to 8. Then he will be moving to the middle stage, that is from 8 to 11. And then we go to this preparatory stage and preparatory, then middle stage he will be from 11 to 14. मतलब 6th, 7th, 8th बच्चा करेगा and 9th onwards he will be in the secondary stage. अब इसमें specialities हैं. Like जो first stage है वो foundational stage है. उसमें बच्चे को जैसे कि activity based teaching होएगी. Activity based teaching will be there. And it will basically be playway method, child centric है कि बच्चा पढ़ना कैसे चाहता है वो उसको मतलब focus किया जाएगा. That will be focused और देते focus किया जाएगा. And जेड़ा preparatory stage ਦੇ ਵਿੱਚ है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ थोड़ा बच्चे ਨੂੰ interactive बनाया जाएगा. Interactive means
बच्चे के नाल गलबात की जाएगी कि किन्नी को नॉलेज मिल रही है, how much he is getting. And then we move on to the middle stage. In the middle stage, subjects will be introduced to the child. जैसे कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स होंगे, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, साइंस, जोलॉजी, बॉटनी, मतलब सारे सब्जेक्ट्स बच्चा उन्हें टेस्ट करेगा कि मैनू सब्जेक्ट केड़ा अच्छा लगता है in the middle stage, and then he'll choose those subjects in the secondary stage from 9th onwards. और जिहड़े 9th onwards होगी वो जिहड़ी इन्हां दी learning होगी, that will be purely experiential learning, and they will be based on critical thinking कि बच्चा किस तरह सोचता है, critical thinking दे विच होगी, है ना. So these skills, literary skills, they will be polished in the secondary stage. तो ये सारा मतलब जिहड़ा है वो complete change है अपनी हुण education policy दे विच. ते पेरेंट्स ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੈਸਟ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗਰੋ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. This is the basic motive of ours for holding this webinar today. So these are the stages and what we will be doing in these stages. So these are the basic things which this new education policy aims at. One is holistic development. Holistic development में तो पहला भी दसिया कि मतलब बच्चे दा complete character building होगा, ओदी जिहड़ी creativity है उन्हों उभार के अगे लिया जाएगा, है ना, ओदी all round development of the personality होगी, and he will be able to face the 21st century. 21st century ਨੂੰ ਉਹ अच्छी तरह फेस कर सकेगा. एक्सपीरियंशियल लर्निंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ the child will not learn anything by heart. ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स ਦੇ थ्रू, कुछ एक्टिविटीज ਦੇ थ्रू ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, और ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਰਨਿੰਗ ਜਦ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ. In the same way, the children will be undergoing experiential learning, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆ ਸਾਲ ਪਰ ਦਿੱਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ. No, it will be based on experiments and based on activities. So it is an experiential learning. And the last, as we have already discussed so many times, that there would be a flexibility in the choice of courses right from class 9. ठीक है, but कोई भी subject अपनी choice के according ले सकता है. So these are the main, जैसे जिन्हों आप कहना निचोड़ है ना. So these are the main features, that is child centered, बच्चे दे इंटरेस्ट दे अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा. बच्चों ਨੂੰ खेल के पढ़न दे विच ज़्यादा रुचि हुंदी है, they enjoy playing क्लेज दे नाल कोई एक्टिविटी करा के, रोल प्ले करा के, या फिर इकट्ठे कुछ बोल के. So in that way the children will be taught. Child centered होएगा ए नवी एजुकेशन पॉलिसी. Vocationalization, now this is very very important. छोटे बच्चों लिए इतना नहीं है, but as parents तो अनुसार ये पता होना चाहिए कि vocationalization ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਕਿੱਲਸ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ. ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਪੈਂਟਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ हेयर कटिंग, बार्बर बनना, लाइक या कपड़े सीना कोई बहुता ਵੱਡਾ या बहुत अच्छी ਕੰਮ नहीं हैगा. बट ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ याद रखना चाहिए कि आजकल फैशन डिजाइनर्स ने बहुत लाइक ਜਿਹੜੇ बहुत अर्न कर रहे हैं, and barbers, they have turned into, they have started hair salons जिथे काफी इनकम हुंदी है. तो कोई भी जिहड़ा है स्किल है वो आप ये नहीं कह सकते कि it is waste. If the child is interested in playing तो हो सकता है वो बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन या स्पोर्ट्सवुमेन बन सके. So vocationalization, बच्चों को कोई skills, carpentry, repairing of gadgets, है ना, gardening, इन सारी skills दे विच involve. And higher education is very flexible, बहुत flexible है. बच्चा कभी भी एंटर कर सकता है एजुकेशन सिस्टम दे विच और कभी भी लीव कर सकता है. पहला था after 11th, if you leave, you cannot, if there is a gap in studies, there is a problem. But हुन ऐसा
वो पता नहीं वीडियो जी किमें होगी। मैम आप म्यूट हो गई हो। हेलो मैम। मैम आपका माइक म्यूट हो गया। Good evening, parents. Just wait for a while. Maybe some connectivity problem is there. Just wait for a second, please. Hello. Yes. कौन सुन रहे हैं जी? Yes, yeah, ma'am. So parents, इस तो पहली वाली स्लाइड तो समझ आ गई सी कि मतलब मैं ऑडिबल सी उस समय तो सुन रहे हैं सी जी? Were you able to hear me? Yes, ma'am. Okay. So these are the main features of new education policy. Child-centered, बच्चे दे interest ਦੇ according ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਗੀ। Vocational ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ skill ਸਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਵੇਂ carpentry ਹੋ ਗਿਆ, hair dressers ਹੋ ਗਿਆ, tailoring ਹੋਗੀ, repairing of gadgets ਹੋ ਗਿਆ, and high education बहुत ज़्यादा flexible होएगी। ते ये सारे important features हैं। Now these are the important merits कि अपने इस नवी education दी मतलब की वधिया गल्लां ने, which are the best, which are the things which are best in the education policy. सब तो पहला है कि अपने Prime Minister Mr. Narendra Modi, he has taken a keen interest in this national policy of education. उन्होंने बहुत ज़्यादा interest लिया है दे विच, and मतलब कि education policy एक बंदे दी कार्ड नहीं है. It is not done by a single person. It is a combined effort of all, means teachers, principals, school students, as well as the education minister and all these people. ये सारे लोगों ने मिलके ही अपनी ये जिहड़ी नवी education policy है इन्हू develop कीता है. So these are some of the merits which we all must know. So next slide we'll be seeing more merits of this education policy. So jehda education policy nu properly check out kita gaya ki will it be beneficial on barle deshaं vich ehi education policy follow ho rahi hai. So very soon we will also be starting with this policy, and Minister of Education was renamed as the Ministry of Human Resource Development. So Human Resource Development naam dita gaya hunna new education policy the according, and the policy is decentralized. It is all over India. Everywhere the same policy would be implemented. So equality of educational opportunities, सारियां नु equal opportunity मिले for education. और ये भी तुहानू दोबारा मैं दसदा कि vocational and technical education इनू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी कि बच्चे अपने हाथ विच रखन कि कल नू अपना मतलब जीवन दे विच कुछ ना कुछ करके एटलीस्ट पा सकन. Then technical education, and the policy emphasizes recruitment of teachers on merit improvement. So teachers will also be trained. We all teachers have already started with our training sessions, है ना? We see बच्चों को किवे और वधिया करा सकते according to the new education. These are some of the merits और ये basic concepts सीगे जी जेडे आप सब नू पता होने चाहिए as teachers, as parents. So these are the basic concepts which we all must know. So with this we come to the end of this webinar. मतलब कि ये बहुत छोटा जिहा education policy दे विच की है, but you as aware parents must go deeper into this policy and must try to find out what is good in this policy and why we must help our children to grow with this, and how to implement this policy with our children at home. So thank you, dear parents, for joining this webinar, and I thank the management and all those people who have been involved in this webinar. Thanks a lot, everyone, for joining, and I hope you must have got the basic information about this new education policy. Thank you once again. Thank you.